The last time we talked about brain development, and you saw how intricate the story is of the interaction of the genes with environment, even at the molecular level, even at the basic cell level, and the membranes that cannot differentiate unless there is a signal coming from the environment, which is the induction. So differentiation, induction, cell determination, and we had talked about how this begins. The ectodermal tissue, the mesodermal tissue, the endodermal tissue, all three tissue layers are exactly alike, totipotential. And this is where you see the stem cell research is working on right now, working on the cells which are the germinal cells. So, from the totipotential cells to differentiated cells, and this interesting story goes on. We are going to go further today into how the cells further develop and what are the processes. These processes have been very well documented, very well experimented, and let me say extremely good detective work by scientists, neurobiologists, biopsychologists, neurophysiologists, and anybody who was interested in working on this area. Let me just give one name which will keep coming again and again. Paskorakish, Paskorakic. Paskorakish, I heard him speak. He was a Czech physician, but instead of practicing medicine, he went into neurobiology, and he is one of those outstanding scientists who discovered how neurons travel, and we'll show you the pictures today. So, from the totipotential to the specialized cells, and we said, we gave you the two very important names, the terms embryogenesis and histogenesis, where the embryo develops from the zygote embryo to the fetus and the neonate, and then histogenesis, which is the development of the cells, and we said the signal comes from notochord. The notochord is the first signal that comes. In all cases, it is said the notochord acts to limit or specify the developmental opportunities of one group of cells through their interaction with another. Now look at this, very interesting. One, that it limits or fences the direction in which the cells are going to develop, and two, it also expands the cellular expansion of or development of the cells in another direction. So, limiting and specializing both at the same time done by the notochord. So, the initial division of cells is differentiated and the change is induced by the notochord, which thus determines the fate of the cells and their layers. What are the stages of development? And we talked about this, and I am going to show you some of the very interesting processes in the pictures as well as show you what happens. And last time I showed you that there were three layers of cells. Assume that these three papers which are exactly alike, coming from the same sheet and coming from the same wad of papers, all three, if they are placed on each other, are exactly alike, right? So, assume that one of them, this one, the top one, is the ectodermal layer, this one, the middle one, is the mesodermal layer, and the one at the bottom is the endodermal layer. So, what happens? These three are growing from the small papers into the large papers, and they will continue growing, as I said last time. But what happens? Here, let me just pick up the middle two, the first and the second. In between the middle of this, the ectodermal, the mesodermal, there is a strip from here which attaches the inside of the ectodermal. Once this is done,
then this will no longer be similar to this or to this. That is the attachment of the mesodermal tissue. Once it takes place, which is the notochord, then differentiation has taken place. So the notochord attachment leads to the development of the neural plate. Now let me use these papers again. This is the neural plate once the notochord attaches in the center. Okay, so flat, this is the neural plate. And then this neural plate starts moving inwards. It becomes the neural groove. Very interesting. And there's cell growth. There's a rapid cell growth here, here, here. And cells are growing rapidly. And in order to accommodate those cells, this is growing and this is then turning. And what do you think will happen at the end? Of course, the neural tube will form. Right now you can see the neural tube. And all of this is not joined, only the center is joined, and there are little bits of tissue which has come up from here within this and joined here. The little dots, spots, bodies. We call them somites. So there will be little somites here, and there is this canal, the tube, which is empty. And then we will see what happens within this tube. So the processes that I've just talked about is a neural plate that is formed and appears in the center, which is the notochord, and then it starts turning from the center upwards. And there is something very interesting which is happening at the frontal part of it, which is this part of it. There are little dots which are going to form eventually a very important part of our system. And these two dots are bilateral on both sides. Right? So, out of this will emerge eventually the eye cup, the eyes. And out of this will also emerge the retina and the parts of the eye that help you see. So, neural plate forms, the head forms, the bulb in the head forms, and the eye cups form, the little bulges which form. And this is around the 17th day of gestation, 17th day of life of that zygote, or 17th day of what we call the intrauterine life inside the uterus. Now what happens? You have thought about this question. What about this bulb at the beginning, which becomes the head and the skull and the brain? What if we cut it? What will happen? Another bulb will form. Because this is the beginning stages, and this bulb will reform itself from the tissue, and then, but if it is done much later, then this bulb head will not form. So it will quickly replace itself, and it will replace itself only in the early stages of development. This rod becomes longer and longer and broader and broader, and the growth is in both directions. And as I said, then it becomes the groove. The groove, then when it joins, becomes the neural tube, which is a consequence or a result of rapid cell multiplication and division. The tubular form is the one in which the primary neurulation takes place. Now we are going to talk about what is the primary neurulation, where the brain and the spinal cord is being formed. Around the 18th day, there is thickening at both the ends, the lateral ends, and the raising of these ends, and the deepening of the center. I'll just show you the picture, which leads to the joining in the middle. On the 21st day, the tube is completely fused, and there are somites, the cell bodies, on the center, and they extend in both sides. So the somites
will go in both sides and develop into what? The somites or this top end, the little bodies. What are they going to develop into? Yes, that is a very good guess. They will develop into the ganglionic system and the peripheral nervous system. Yeah, उसने भी तो कहीं से बनना है, वो यहाँ से बनेगा. The peripheral nerve, the central nervous system will be formed here, the peripheral out of this, the little bodies on this side. Neural canal, ये जो खाली ट्यूब थी अंदर से, ये this is called the neural canal, and the neural canal remains for what we call the ventricular system. Now let me show you this picture. Very nicely illustrates what I have talked about. If you look at the first picture here, where the groove is deepening, and you can see this is how the plate was, the bulbous end here, and in this bulbous end, if you cut this and take a section out, you will see what is happening here. This is the plate, which is turning into a groove and getting deeper inside, and the sides are rising, and it is becoming deeper inside and deeper inside till such time that it closes and becomes a tube. But you see the dark green inside? The dark green inside is the vacant canal, the tube. And let's look at it, how it looks from the outside. This was the plate becoming the tube and becoming the groove and becoming the tube. And you see in the center of the tube, on the top, it is joined. And this is where the somites are going to be placed. And this is where the development of the peripheral nervous system is going to take place. Now the question that you have asked and you have thought about is, what is happening in the vacant canal? जो खाली जगह है कैनाल की, उसके अंदर क्या हो रहा है? उसके अंदर बहुत कुछ हो रहा है. इनफैक्ट उसी में सेल डेवलपमेंट हो रही है और सेल मैचुरेशन हो रही है और उसके बाद सेल माइग्रेट. Now look at this. This is the canal, and in this canal you see the vacant area of this canal, and in this vacant area you see cells moving up. एक मैग्नीफाइड तस्वीर एक सेल की आपको नजर आ रही है. अच्छा, मैग्नीफाइड तस्वीर में आप देखेंगे कि सेल ट्रैवल कर रहा है बड़े आराम से ऊपर को, और ये जो जैसे स्पाइडर की फिलामेंट्स होती है ना, बिल्कुल इस तरह की फिलामेंट्स बनी हैं, जिनको हम आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे ये क्या है. ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, सेल का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है. आपको भी बस चाहिए होती है कहीं जाने के लिए, सेल को भी ये ट्रांसपोर्ट चाहिए कहीं जाने के लिए. अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कहाँ जाना है सेल ने और कैसे जाना है, और इसको देखते में आप ये देखिए कि सेल कहाँ कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं. सेल ने 6 लेयर्स सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पूरे करने. इसका मतलब ये कि दे आर गोइंग टू बी traveling a long distance, and they travel, and we are going to find out where do they go, how do they know where to go, and where do they know when to stop, and what is the system that programs and primes these cells to travel. And you see these cells have been traveling, और एक सेल नहीं, ये बीच में से सेक्शन हम काटते हैं, और ये देखिए छोटे सेल हैं, जो जो ये डेवलप होते जा रहे हैं, ये सेल बाहर को जा रहे हैं. और ये माइग्रेशन है सेल्स की, जिसके बारे में हम बात करेंगे. सबसे पहले ऊपर जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर के सेल भरते हैं, मगर बनते यहीं पे हैं. एक तस्वीर और आप देखेंगे, और ये तस्वीर है बहुत याद रखने वाली तस्वीर, बहुत ही इम्पोर्टेंट तस्वीर है. इसके बगैर ब्रेन में सेल्स डेवलप नहीं हो सकते. ये क्या तस्वीर है? इसमें आप देखेंगे कि ये एक एक्सॉन की, ये सेल की एक्सटेंशन है. जिस तरह होता है ना अपना, ये मेरा समझ लीजिए पंजा मैंने आगे बढ़ाया, इसी तरह ये पंजा सा आगे बढ़ाते हैं और फील करते हैं कि भाई किधर है जगह. बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये सेल खुद फील करते हैं कि वेयर टू गो. और ये फीलर्स क्या हैं? इसको कहते हैं ग्रोथ कोन. हर एक्सॉन के आगे ये ग्रोथ कोन लगी हुई है, और ये ग्रोथ कोन है. जब सेल अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है तो फोल्ड हो जाती है, खत्म हो जाती है. एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस एज वेल. सो
The processes that are intricate but at the same time extremely interesting, the processes of the neuronal development. Let's go into it. We've talked about the primary neurulation, we talked about the development of the cells and the tube and the formation of the tube, the formation of the somites. Now let's talk about the secondary neurulation. The secondary neurulation is when the caudal part or the tail part of the spinal cord is formed. Primary neurulation में the brain is formed, and secondary neurulation means development of the neurons में spinal cord की हिस्से बनने शुरू होते हैं, पहले tail end. अब ये न्यूरल क्रेस्ट जो थी जिसकी बात हमने की, जो टॉप पे जो छोटे छोटे सेल्स थे, these somites and these cells, neural crest is the ectodermal cells which are at the margin of the grooves, at the top of the grooves, and these form the ganglionic system, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया. Once the tube is closed, the cells inside develop very rapidly, and the tube, the canal that you have seen, कागज को जब मैंने फोल्ड किया वो खाली एरिया जो था उसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर जोन. अब सारी एक्टिविटी जो है वो वेंट्रिकुलर जोन के अंदर है और वहीं पे सेल्स आर डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग रैपिडली, 20,000 और मोर सेल्स पर मिनट. अब सोच नहीं सकते इतनी रैपिड सेल डेवलपमेंट. इसके अंदर जो वेंट्रिकुलर जोन है, इसको भी अगर हम कहें कि इसका इंटरनल हिस्सा जो बिल्कुल इनर साइड ऑफ द ट्यूब है, that consists of single layer of cells and they keep multiplying and they keep increasing. Now the question that you have thought about it, वो इतनी सी ट्यूब है ये कागज की बनी हुई, इसमें से कितने सेल बन जाएंगे? अगर 20,000 सेल्स न्यूरॉन्स पर मिनट बन रहे हैं तो ये फट क्यों नहीं जाती? क्या हो रहा है इसके अंदर? क्राउडेड तो नहीं हो जाता? यस, हो जाता है obviously, but cells move as I've shown you in the pictures, and the cells move upwards and outwards. So cell migration is the second major concept that we have here. Cell migration takes place. The migration is always inside out. So the cells will move from the inside of the tube to the outside. वो आपने वो तस्वीरें रेडियल वाली देखी है, उसमें यही है, सेल ट्रांसफर होके ऊपर को जा रहा ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत. सो अंदर से सेल मूव करेंगे आउट. सो इनसाइड आउट माइग्रेशन हो रही है. अब 3 लेयर इसमें फॉर्म होंगे, द इंटरनल लेयर, द मिडल लेयर एंड द सेल फ्री लेयर. इंटरनल लेयर तो वो है जहां पर बन रहे हैं सेल. मिडल लेयर वो है जो कि अब सेल उसमें से गुजर रहे हैं, और उसके सबसे ऊपर जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स का टॉप मोस्ट हिस्सा बाद में बनेगा, वहां पर अभी सेल नहीं है, खाली है. अब वो सेल जो के हिस्सा ऊपर का खाली है उसमें क्या है, उसमें जब इवेंचुअली ये सेल पहुंचेंगे तो अपने लेयर्स बनाएंगे, लेकिन इस वक्त फाइबर वगैरह मौजूद है जिस पे सेल ने ट्रेवल करना है. सो इंटरनल लेयर, cells which are still dividing, middle layer, cell bodies which will form the gray matter, and cells do not divide after they come to the middle layer. Then the cell free zone, which is the topmost zone, यहाँ पर this is, as the name implies, it is a cell free zone. It only has fiber processes of the first 2 layers and it is empty for the cells to come and find a place. तो फाइबर प्रोसेसेस हैं जिस पे चल के सेल अपनी जगह ढूंढेगा. यहां पर क्या होगा, 3-4 चीजें आपको याद रखनी होंगी. सेल प्रोलिफरेशन, यानी सेल का बहुत ज्यादा बढ़ना, प्रोलिफरेट करना, बहुत ज्यादा ग्रो करना और मल्टीप्लाई करना. फिर कॉन्सेप्ट जो है सेल माइग्रेशन, सेल्स का एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना. फिर है सेल मैच्योरेशन, सेल मैच्योर करेंगे to become what they are in the place that they have arrived. And then the cells will form interconnections. How do cells form interconnections? We will talk about that. But then
there is also a very sad concept which is the cell death. जब 20,000 न्यूरॉन्स पर मिनट बनेंगे और इतने ज़्यादा न्यूरॉन्स इस जगह में कमी पड़ जाएगी, कंपटीशन है ना, फिर सेल कंपटीशन भी है, तो फिर कुछ होगा कि कुछ सेल्स मरेंगे, they'll die off, and some cells will continue thriving and growing. Now what is that story? That's why do some cells die off and why do some cells thrive? Let's go back. मैंने 17th day intrauterine का बताया, 18th day intrauterine का बताया. Now let's come to the 24th day intrauterine, where we had talked about the rostral part, and I showed you the picture of the neural tube which forms eventually, the rostral is the frontal part. Eventually it forms 3 bulbs, and 3 bulbs which will form, yes, form the forebrain, midbrain and hindbrain, right. अब ये 3 bulbous forms बन गए हैं, और इन 3 bulbous forms को अगर आप देखें तो तीनों bulbous form बिल्कुल एक जैसे हैं. लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था. How do they know what to become? How does the frontal one know to become the forebrain? Middle one know that I will become the midbrain, and the hind one know that I will become the hindbrain. Posterior most is always the hindbrain towards the spinal cord, and at this point in time all 3 bulbs are not differentiated. However, यहाँ पर भी interaction होती है environment के साथ. Each one of these bulbs needs the other location to tell it how to develop into what it is going to be. So आगे वाले को पीछे वालों का पता होना चाहिए कि पीछे वाले किधर हैं, दरमियान वाले को दोनों साइडों का पता होना चाहिए कि वहाँ मौजूद है और उसके कनेक्शन वहाँ बनते हैं. So each depends on each other to interact, to differentiate. The surrounding area, the key is the surrounding area induces differentiation. So interaction कहाँ हुई? Environmental stimulation कहाँ हुई? Surrounding area से. So surrounding area induces differentiation of the 3 bulbs into different forms. Remember, again, environmental influences are important even at this basic stage. And what if some scientist, mad scientist like you, me, decides to rotate these? जो hind brain था उसको front में ले आते. Again, the principle remains the same. They get the stimulation from their neighbors. So अगर hind को आगे ले आएंगे तो वो front brain बनेगा, ये frontal brain बनेगा, ये forebrain बनेगा. So the position determines the direction of development. अब इसके बाद अगला सवाल ये होता है कि the same cells develop into different regions if their locations are changed. Yes, that is true. Again, the environmental stimulation makes a change. Cell division is at this point is very rapid. The neurons and the glial cells are dividing, and then there is a process that these cells will migrate to different parts of the developing brain and form what we call bunches of neurons, and these bunches of neurons are called nuclei. So पहले तो सेल बने, माइग्रेट किए, एक जगह पे पहुंच के जुड़े, एक दूसरे के साथ कनेक्शंस फॉर्म किए. अब जब ये न्यूरॉन इस न्यूरॉन के साथ कनेक्ट होगा, these will form what we call nuclei, and they are connected to do a similar kind of a job. अब ये सवाल आपके ज़हन में ज़रूर आता होगा कि ये इनको कैसे पता चलता है कि किस जगह पे जाके कैसे मैंने किसके साथ जुड़ना है, मेरा साथी कौन है, ये कौन बताता है इसको? Is it pre-programmed or is it genetically, environmentally determined? It is pre-programmed. There are several hypotheses, but one of the main things which stand out is that cells will migrate, and the cells will travel, and the cells will travel to a particular location and develop their extensions at that point in time. So nuclei form होते हैं. Once nuclei are formed,
there is rapid proliferation of these extensions, the dendrites, the axons, and then this will also proliferate, and then the synapses are formed. So, rapid proliferation of fiber tracts and connections. This is what nuclei is all about. What about the neural crest जिसको हम पीछे छोड़ आए न्यूरल ट्यूब के ऊपर? That will form the ganglionic cells and it will then eventually, आपको याद है कि ganglionic system is an independent system which takes care of a lot of our involuntary functions. अब आइए ऑप्टिक सिस्टम की तरफ जो कि फ्रंटल एरिया में से बन रहा है. ये ऑप्टिक स्टॉक इसमें से बनेगी जिसमें से ऑप्टिक नर्व वगैरह बनेगी, ऑप्टिक आई कप बनेगा जिसमें आंख बनेगी, रेटिना इसमें बनेगा और रेटिना के साथ इसी के साथ आई कप में से लेंस भी एक्टोडर्मल टिश्यू से बनेगी. अब कितनी सिमिलैरिटी है आई की और ब्रेन की, ये सोचा आपने? विच इज वाई दिस इज आवर मेन, द होमो सेपियंस मेन सेंसरी सिस्टम. कॉम्प्लेक्स है लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि इट हैज इवॉल्व्ड आउट ऑफ द ब्रेन सेल्स एंड दिस इज something that you and I need to think about. The frontal eye cups, retina forms as an invagination, which means turning inwards, of the bulging eye vesicle. इसमें भी सेल्स की फॉर्मेशन बिल्कुल उसी तरह होती है जिस तरह ब्रेन की होती है कि सबसे बाहर वाले सेल्स पहले बनते हैं. आपने रेटिना का पढ़ा हुआ ना कि गैंग्लियोनिक सेल हैं, बाइपोलर सेल्स हैं, फिर रॉड्स एंड कोन्स हैं. तो सबसे पहले गैंग्लियोनिक सेल जो सबसे टॉप लेयर है वो बनेगा, उसके बाद बाइपोलर सेल जो सेकंड लेयर है वो बनेगा और सबसे इनर मोस्ट लेयर जो कि फोटो रिसेप्टर्स हैं जो कि रॉड्स एंड कोन्स हैं वो सबसे आखिर में बनेंगे. सो आई एंड इट्स सेल्स, the retina develop directly from the brain tissue, and there are certain common substances which are found and chemical compositions that are found in the eye as well as in the brain. अब थोड़ा सा इन कॉन्सेप्ट्स को जिनका मैंने बार बार जिक्र किया है इनको थोड़ा सा डिफाइन कर लें. पहला है सेल प्रोलिफरेशन. सेल प्रोलिफरेशन क्या है? दैट सेल्स आर डिवाइडिंग, स्प्रेडिंग and increasing in number. So it is not just cell division, it is not cell multiplication, it is not just cell increase in number but also spreading out. So cells proliferate, and then in this proliferation process specific parts of the brain start to differentiate. If at this point in time we remove a small part of the ectodermal tissue, वो जो रॉड में से निकल रहे थे उसका एक टिश्यू निकाल लें जब वो डिफरेंशिएट कर रहा है, तो आपका क्या ख्याल है क्या होगा? If it is done early on, this tissue will immediately be replaced because उस वक्त प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा हो रही है. उस गैप को फौरन यहाँ से अगर हम एक टिश्यू काट लेते हैं तो बाकी जल्दी से वो प्रोलिफरेट करके इसको फिल कर देंगे. लेकिन 8 दिन के बाद या 10 दिन के बाद अगर हम इसको काटते हैं तो ये गैप फिल नहीं होगा. इट विल रिमेन एज अ गैप इन द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन. सो इफ अ स्मॉल पीस ऑफ ectodermal tissue is removed, the defect is by the proliferation of the neighboring cells. If surgery is done after this duration, permanent deficits, extreme and permanent deficit is seen. सेल प्रोलिफरेशन से क्या होता है कि वो जो वेंट्रिकुलर जोन है ना अंदर की ट्यूब, उसके अंदर बहुत ज्यादा डेंसिटी बढ़ जाती है सेल की, और इतनी ज्यादा है कि लास्ट टाइम आपको याद होगा मैंने कहा था कि आपके और मेरे जो अडल्ट ब्रेन है इसमें से 10 गुना ज्यादा सेल्स, द नंबर ऑफ सेल्स is about 10 to 12 million times more. So whatever number of cells you have, double it or make it 1.5 times more. That is the number of cells that are at that point in time in the embryonic brain. My God,
इतना ज़्यादा सेल्स का होना, तो फिर क्या होगा, हमारे पास कम क्यों है? इसलिए एक कॉन्सेप्ट है सेल डेथ का, जो कि मैंने पहले जिक्र किया था। सो मैक्सिमल सेल डिवीजन इज 20,000 न्यूरॉन्स पर मिनट, और ग्रोथ स्पर्ट जो है, जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है सेल्स की, वो है 10 to 18th week of gestation. At this point in time, the brain growth is sensitive to radiation, chromosomal anomalies, viral infections. मदर को कोई इन्फेक्शन हो गई या एक्सपोजर हो गया, लेट्स से मीजल्स वगैरह का, अब उसका असर कहाँ होगा? On if it is during the 10th and the 18th week of gestation, it is going to affect the growth of the brain and that particular part जो उस वक्त ब्रेन का बन रहा था, and the fetus is born with mental retardation and with other serious defects such as blindness. ब्रेन ग्रो करती रहेगी, but gradually from the 30th week to second year postpartum, 30th week of gestation से सेकेंड ईयर पोस्टपार्टम, आपको याद है मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ तक ब्रेन ग्रेजुअली ग्रो करती रहती है, सेल्स की कनेक्शंस फॉर्म होती रहती हैं, तो देयर इज कंटिन्यूड ग्रोथ इवन आफ्टर बर्थ टिल अबाउट 2 years। लेकिन इस दौरान में अगर ब्रेन को कुछ चीज़ें ना मिले, फॉर एग्जाम्पल मदर इज मैल नरिश्ड, और when the child is born in the first 2 years it's extremely malnourished, तो brain cells जो हैं will die off, will be smaller, the brain size will be smaller, the cell size will be smaller, the myelination of the cells will not take place. So by starving a child, you're starving the child's brain as well. And mind you, this is an irreversible effect. You cannot after 2 years start feeding the child and say, okay, its brain will grow. No, that will not happen. The cells will not regenerate. Okay, coming back to the second major concept that we had been referring to is cell migration. Cells migrate towards the periphery, from the inside towards the periphery. वो तस्वीर याद करें ग्लियल सेल्स वाली, उसको सामने रखें, ये देखें अंदर से खाली है, जितने सेल्स वहाँ बन रहे हैं, दे आर मूविंग टू द पेरिफेरी एंड दे आर मूविंग आउट. दिस माइग्रेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग. हाउ डू दे मूव आउट? वो कॉलम्स, वो स्पाइडर्स वाली याद करें, जिसमें द फॉर्मेशन ऑफ दीज कॉलम्स ऑफ रेडियल ग्लियल सेल्स, एंड दीज रेडियल ग्लियल सेल्स, ये समझ लीजिए कि अंदर से ये फॉर्म हुआ है, और ये रेडियल ग्लियल सेल, ये लंबा 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 फ्रॉम ये पहली मंजिल से छठी मंजिल तक लेट से है. अब सेल जो है वो यहाँ बना, और न्यूरॉन बनने के बाद उसने अपने आप को इसके इर्द गिर्द लपेट लिया, और लपेटने के साथ उसने इसके साथ ट्रैवल करना शुरू किया. अब ये अपनी जगह पे पहुंच गया, यहाँ थैंक यू वेरी मच, वो उतर जाता है, और उतर के वहाँ जो जगह है वहाँ पर वो अपने कनेक्शंस ढूंढता है, एक्सप्लोरिंग. और वो याद है जो ग्रोथ कोन्स है वो निकल निकल के ढूंढ रही होती है कोई जगह है जहाँ पर कनेक्ट होना. सो cells travel on the transport system, which is the radial glial fiber, and they travel from the periventricle zone, which is the internal ventricle zone, outwards. And this is a very effective transport system. इसमें बहुत सारी टेक्निकल बातें हैं कि वो कैसे चिपकता है और कैसे वो चढ़ता है और कैसे, तो ये सब चीज़ें हम नहीं आपको बताते, लेकिन इतना याद रखें कि सेल्स के लिए भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम ब्रेन ने प्रोवाइड किया हुआ. अब ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ये सेल को ऊपर लेके जाता है, लेकिन आपने भी देखा है बसों के लिए दौड़ लगती है, कितनी दौड़ होती है अगर रश का टाइम हो. सबकी कोशिश होती है कि मैं पहले इस पे चढ़ जाऊं, राइट? एग्जैक्टली. इसी तरह से सेल्स की भी दौड़ लग रही होती है. एक सेल जो है वो जरा स्लोली 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 आता है, दूसरा सेल जो है वो तेजी से आके इस पे चढ़ जाता है. अब जो पीछे वाला सेल है वो तो पीछे रह गया ना, तो जो आगे वाला है वो पहले निकलेगा, जगह भगनाएगा, भाग के जाके अपनी जगह पहले ढूंढ लेगा.
ऐसा भी हुआ है, पास्को राकेश ने एक फिल्म बनाई है और बड़ी इंटरेस्टिंग, वो अंदर मंकी ब्रेन की है, जिसमें वो एम्ब्रियो जेनेसिस के दौरान वो उसने बताया कि किस तरह से सेल चढ़े हैं और 3, 4, 5, 6, 7 सेल एक वक्त में एक ही रेडियल पे चल रहे हैं। तो जो पीछे वाला है उसके आगे वाले स्लो हैं। उसने कहा ऐसी की तैसी, वो उसके ऊपर चढ़ता हुआ चढ़ाता हुआ वो सबसे पहले निकल गया। सो देयर इज competition, you must remember, even at the cellular level there is competition. ब्रेन सेल्स भी compete कर रहे हैं कि जल्दी निकल जाएं ताकि आगे रास्ता हमारे लिए बन जाए और जगह बन जाए। इसकी वजह मैं आपको बताती हूँ क्यों। Why is that? The slower cell will be arriving later. Survival of the fittest, याद रखिए। वो जब वहां पहुंचेगा तो उसको कनेक्शन ढूंढने पड़ेंगे कि पहले सेल्स के साथ ये जगह ढूंढनी पड़ेगी जहां वो अपने आप को, शुरू के सेल्स के लिए तो जगह होगी, बाद में जो सेल्स आएंगे वो क्राउड होता जाएगा, तो कम जगह अवेलेबल होगी, कम कनेक्शंस अवेलेबल होंगे। फिर आपको सेल डेथ का जो कॉन्सेप्ट है वो यहां से निकलेगा। कई सेल्स इतना ट्रेवल करते हैं कि पहले लेयर से अप टू 6 लेयर्स ऑफ सेल्स, 6ठे मंजिल तक वो जाते हैं। हाँफते कांपते वो उस रेडियल पे चढ़ते हुए अपनी जगह ढूंढते हुए 6th लेयर तक पहुंच जाते हैं। एंड दैट इज एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना, बट ईच सेल हैज टू ट्रेवल एंड फाइंड इट्स लोकेशन। रेडियल ग्लियल सेल्स जो हैं वो शुरू में बनते हैं, उसके बाद वो खत्म होते जाते हैं, और वो दोनों तरफ की, जैसे आपने रस्सी गिराते हैं ना, और वो रस्सी नीचे भी लगी होती है और ऊपर भी होती है और उसके पकड़ के हम चढ़ते हैं, बिल्कुल इसी तरह से द रेडियल ग्लियल हैज attachment at both ends and provides a secure transport system for the cells. Neurons move up, some are slow, some are fast. The ones that are slow are left behind, and those who are fast arrive earlier and connect, and therefore they have a greater chance of surviving. बात याद रखने की है, इसको मैं सेल डेथ और सेल सर्वाइवल की बात बाद में करूंगी, लेकिन याद रखने की है कि इनसाइड आउट माइग्रेशन का जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि सेल्स सबसे ऊपर वाले लेयर्स के सबसे पहले जाएंगे और सबसे नीचे वाले लेयर्स के आखिर में आएंगे। सो न्यूरॉन्स ऑफ द लेटर फॉर्म्ड लेयर्स मस्ट माइग्रेट थ्रू अर्ली फॉर्म्ड लेयर्स टू इवेंचुअली अराइव एट देयर डेस्टिनेशन। अब सेल्स की जो डेवलपमेंट और ग्रोथ है उसकी कुछ बात कर लें। लार्ज सेल्स विल डेवलप बिफोर एंड ग्रो बिफोर द स्मॉलर सेल्स। ऑब्वियसली बड़े सेल बनेंगे, छोटे सेल्स तो उनके बीच में से भी निकल के जा सकते हैं ना। दूसरी बात, मोटर सेल्स विल डेवलप बिफोर द सेंसरी सेल्स। द सेंसरी इंफॉर्मेशन कम्स लेटर। व्हाई? थिंक अबाउट इट। The motor cells are being exercised. Remember, मैंने आपसे कहा था about the 5th month they start working, and motor ability, yawning वगैरह सारी चीजें शुरू हो जाती हैं within the embryonic stages. So motor systems पहले बनेंगे, motor cells and sensory systems बाद में बनेंगे। Neurons पहले बनेंगे and glial cells will come afterwards. Neurons are extremely important. Glial cells are of course important, and we have seen the radial glial cells have been helping neurons to arrive where they need to arrive. But neurons come first and glial cells come later. The cellular maturation that we talked about takes 4 different stages. First stage is an outgrowth of the cell, an elongation of that outgrowth, which will eventually be the axon. Secondly, the stage is growth and elaboration of the dendritic processes. Cell has to have the axon and the dendrites. Then thirdly, it needs an expression of appropriate biochemical processes which are appropriate to that location in which the cell is going to be going, and the function of that site in which the cell will host itself. जहाँ पर वो जाके अपना मकाम बनाएगा
उस सेल को उसके साथ अपनी जो उस पोजीशन है, केमिकल कंपोजिशन उसकी मिलती जुलनी होनी चाहिए। इसी में एक चीज और भी आपको बताती चलूं कि सेल के अंदर ग्रोथ कोन्स और ग्रोथ के अंदर नर्व ग्रोथ फैक्टर और ट्रोपिक फैक्टर, जिसकी आगे जाके बात करेंगे, जो इसने सेल को ग्रो करने में, एक्सपैंड करने में और इन एक्सपेंशंस को फूड देने में या न्यूट्रिएंट देने में काम आना है। इतनी ज्यादा जरूरत है इन सब सब्सटेंसेस की कि उस वक्त ब्रेन में स्टारवेशन का मौका आ ही नहीं सकता। देन synaptic connection, which is the fourth thing that needs to be formed, connections between the neurons. Axons grow out of the neuron first, ये आपको बताया, and there is वो तस्वीर जिसमें वो ग्रोथ कोन लंबी सी एक निकली हुई और जिसके आगे यूं कोन है और उसके भी आगे फाइबर्स हैं, वो जिस तरह ब्रश के फाइबर्स होते हैं ना, और इन फाइबर्स से ये फील करता है एक्सॉन कि मैंने किधर को, कौन सी जगह है जहाँ पे जाना है। Very sensitive fibers, and these fibers the growth cone has are called philopodia. Philopodia are cytoplasmic extensions. वो ब्रश की जो वो बड़े लंबे लंबे धागे होते हैं ना, this is philopodia. So axon के आगे growth cone के अंदर philopodia वो ब्रश वाली स्टॉक्स हैं जो आगे आगे जाके महसूस कर रही हैं कि हमने कहाँ जाना है। सो आप सोचिए, एक्सॉन ने अपनी एक्सटेंशन निकाली हुई है और वो डिटेक्टिव वर्क कर रहा है कि भी इधर क्या पोजीशन है। द फीलर्स आर नीडेड, दीज फिलोपीडियाज आर नीडेड फॉर मोटिलिटी। एक तो मोटिलिटी का मतलब ट्रैवल के लिए भी उनको चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ फीलर भी चाहिए कि कहाँ पे हम जा रहे हैं और किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। So feelers are needed at the tip of the growth cone and the growing processes. This is affected by, very important, और लीवाई मॉन्टेलचीनी ने ये पहली दफा डिस्कवर किया था। और आपको याद है पहले लेक्चर्स में आपको बताया था, one of the foremost names लीवाई मॉन्टेलचीनी, रीटा लीवाई मॉन्टेलचीनी ने नर्व ग्रोथ फैक्टर डिस्कवर किया कि क्यों ऐसा था कि जब बच्चा ग्रो कर रहा है या इन्फेंट या ब्रेन ग्रो कर रही है तो उस वक्त नर्व ग्रोथ फैक्टर मौजूद, कोई फैक्टर मौजूद है कि सेल्स अलाइव हैं, उसके बाद एक दफा बन जाएं और मर जाएं तो दोबारा नहीं जिंदा हो सकते। सो द नर्व ग्रोथ फैक्टर इज द वन which keeps the growth of the axons and the cells alive and active. The nerve growth factor or the NGF is the factor which is found only in the growing nervous system, not in the adult brain. Once the brain has stopped growing, the NGF stops manufacturing. And then there are other factors that maintain the metabolism of the neurons, which are called the tropic factors. ज़ाहिर है सेल जब एक्सपैंड कर रहा है और ट्रैवल कर रहा है, उसको कोई वो चाहिए ना, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। आप थोड़ी देर चल के थक जाते हो, बैठ जाते हो, कोई भूख लगी है, कुछ खाना है, तो ये न्यूरॉन तो इतना सफर करके जाएगा दूसरी जगह में, उसको भी कुछ चाहिए ना। सो द न्यूट्रिएंट्स आर प्रोवाइडेड बाय द ट्रोपिक फैक्टर्स and that is essential. And the nutrients, the NGF, this is planned for a specific site, for a specific neuron, for a specific target, which means the neurons know where they have to go or they don't. Now this is a question that you should keep asking yourself. How do the neurons know where to go? And when did they know that I've arrived in the right place? And how do they know what is my function? These are mystery questions that people are working on. Dendrites develop after the axons, after the neurons and the axons. So पहले न्यूरॉन बने, फिर एक्सॉन्स बने, एक्सटेंशन स्प्राउट हुई, अब उसके बाद तीसरा स्टेज में न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स स्प्राउट होंगी. Immediately upon reaching the destination, वो ट्रैवल करके ऊपर पहुंच गया, वहां फैल गया.
उसने डेंड्राइट स्प्राउट करनी शुरू कर दी। क्यों डेंड्राइट स्प्राउट करेगा? द ऑब्वियस आंसर इज दैट इट नीड्स टू फॉर्म कनेक्शंस। दूसरी तरफ से, दूसरी सीढ़ी से कोई और चढ़ के आया है न्यूरॉन, उसने भी अपने डेंड्राइट्स स्प्राउट किए और दोनों ढूंढ रहे हैं कि हमने अब डेंड्राइट्स कनेक्ट करने। अब ये देखिए, मैंने कोशिश की है, नहीं हुआ, राइट? तो क्या जरूरी है? अलाइनमेंट भाई, perfect alignment is needed for these neurons to connect and these dendrites to connect. So that's another program, that innate programming, where the dendrites look, seek, attach, and bind, synapse in a particular alignment. And if this alignment is missed, what do you think could happen? This cell will die off and this cell will die off. So they send out projections. If the cell cannot travel, it will die off. If the cell cannot travel fast enough, it will lose to others which are faster. If the cell cannot reach a place and form connections, well, other cells have found connections, इसके लिए अब जगह नहीं रही. So this cell will die off. So if they cannot form connections, cells die. If they cannot compete, they die. And if they cannot make more connections than are necessary, बाद में connections छांटी चुंटी हो जाते, then cells will die. So cells compete at every point with each other for survival. अब ये है cell death. Why? The question that you have in mind is, why does this happen? याद रखिए कि cells के पास brain में nutrient उतने ही हैं. अगर ये millions of cells हैं, तो nutrients सारों के लिए काफी नहीं है. They're competing for these nutrients as well. They're competing for the nerve growth factor. They're competing for the tropic factors. They're competing for spaces. And if it is too crowded, then some of them will have to die off to make space for others. अगला concept है cell aggregation का. Cell aggregation का मतलब that cells make their way to the area in which they will function as adults. How do they aggregate? How do they align in precision with other cells? Now, this is a very interesting question, and this question was answered by Pascoe, Rakesh, Goodman, Rakesh, and a host of other developmental neurobiologists. So, the question that was answered is, where do these cells travel to and when? So, what they do is inject label substances and follow the migration of these neurons at different ages of gestational development. Day 20, day 30, day 40, day 50, and even in weeks. And what we see happening, and I've seen this, Pascoe, Rakesh, what they do is pregnant monkey, female monkeys को लेके उनको C-section से deliver करके उसके fetus को inject करते हैं with the radiolabeled substance, and then they put the fetus back in location, and the mother has a full-term baby. और जब baby is born, उसकी निकाल के brain decapitate करने के बाद cells को निकाल के देखते हैं कि cells कहाँ पे पहुँचे. Very interesting. And this you can see, जो day 20 के cells हैं वो travel करके कहाँ पहुँचे, day 30 के cells कहाँ पहुँचे, day 50 के cells कहाँ पहुँचे, week 20 के cells कहाँ पहुँचे, वगैरह वगैरह. I mean, this is very intricate scientific research, and what this has shown us is that there is regional development which takes place early on in the embryonic development. दूसरी चीज़ यानी कि specialization शुरू हो जाती है, and regional specialization, that one region is going to become the diencephalon, telencephalon, hindbrain, वो specialization बहुत जल्दी शुरू हो जाती है.
दूसरी कि जो डीपर कॉर्टिकल लेयर्स हैं दे आर जनरेटेड फर्स्ट, यानी कि अगर 6 लेयर्स हैं कॉर्टेक्स के 1 2 3 4 5 6, तो लेयर 6 पहले बनेगा और लेयर 1 सबसे आखिर में. Therefore, the deeper cortical layers are generated first and the most superficial or the top layers last. Interesting finding. इससे क्या पता चलता है कि जो नीचे वाला सेल है ना वो तो बन गया और ये पैक हो गए, तो जो ऊपर जिसने जाना है वो इनके बीच में से रास्ता बना के फिर ऊपर जाएगा, है ना. उसकी स्ट्रगल ज्यादा है, the ones that have to reach to the top, but this is how nature has. So it is, cell migration is always inside out, and earlier layers are those which are nearer to the center, and the later layers that are formed are outside on the periphery. Then there is a concept of regulation. How does this, जो fate mapping से पता चलता है कि cells regulate कैसे करते हैं अपने आप को. We'll talk about the regulation in the next class. Do read, look at the pictures, very interesting pictures. A picture is worth 1,000 words.